Hi everyone, my name is Sandeep Kumar and I'm back with another video. If you have been following my videos, thank you very much for that, and if you find my content helpful, please don't forget to subscribe to my channel. And so in the reading part of IELTS exam, in my IELTS academic exam, I got 9 bands, and many students come to me and they ask me for the tips and tricks which I utilize to get this 100% score in the reading part of IELTS academic exam. So they asked me about a specific question which appears in the IELTS reading exam, which is about giving heading to paragraph. As many students are finding this question difficult and they are saying they're not able to guess the correct headings for many of the paragraph. So I want to share some helpful tips and tricks that I utilize myself to get this maximum possible score. So for this specific part, what I would suggest you is that जब आप ये part attempt कर रहे हैं, don't read the entire passage at once. What happens is that when you read the entire passage at once, you're not able to guess the correct heading. इससे ये होता है कि जब आप पूरा पैसेज एक साथ पढ़ लेते हैं, सारे पैराग्राफ के जो भी आइडियाज़ हैं आपके माइंड में मिक्सअप हो जाते हैं. इसकी वजह से आप जब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ आप मूव ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी हेडिंग्स कंफ्यूज कर रही होती हैं कि ये 2 हेडिंग्स इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए अप्लाई होती हैं, तो आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से आपके आंसर्स करेक्ट नहीं आते. सो the tip here is that what you have to do is you have to only focus on paragraph 1 at once, right? So first of all, you will move to paragraph 1. Now what you have to do is read only the first sentence of paragraph 1. What happens is first sentence is known as the thesis statement. Thesis statement ये होती है कि कोई भी राइटर जब कोई भी पैराग्राफ लिखता है तो थीसिस स्टेटमेंट में वो काइंड ऑफ आइडिया दे देता है कि मैं इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, राइट? So you will read only the first sentence and the last sentence of paragraph 1. And the last sentence is known as the concluding sentence. Concluding sentence means कि जो भी राइटर ने इस पैराग्राफ में बात की है वो लास्ट सेंटेंस में सम अप कर देता है, राइट? सो व्हेन यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस इट गिव्स यू आइडिया ऑफ द इंटायर पैराग्राफ, राइट? वंस यू हैव डन दैट, नाउ यू विल लुक एट द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड जब आपने फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस पढ़ लिया आपके माइंड में काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, राइट? सो यू विल लुक एट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड इससे आपको जो भी अप्रोप्रिएट हेडिंग लग रही है यू हैव टू चूज दैट वन, राइट? इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, दैट्स परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस पढ़ने के बावजूद भी आपके माइंड में आइडिया क्लियर नहीं हो रहा कि इस पैराग्राफ के लिए कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द इंटायर पैराग्राफ. आई रिपीट, इट इज़ पैराग्राफ नॉट पैसेज. आपने दोबारा से कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ना है अगर आप फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद करेक्ट हेडिंग गेस नहीं कर पा रहे. Then you will move to paragraph 2. Again, you will read the first sentence of paragraph 2 and the last sentence. After reading these 2 sentences, you will look at list of headings and then choose the correct heading. Hopefully, you will be able to do that. Again, if you're not able to do that, then read the entire paragraph and then move on to the next part. So I utilized this tip in my exam and I was able to get the perfect score in the reading part of IELTS. So I suggest you can also try this method and I'm sure that you will be able to get maximum number of correct answers with this tip. And please share your experience with me. How does this method work for you? And you can comment here in the video. And if you have any questions, you can ask me in the comments and I'll be happy to help you.